let's see what is automated facial recognition system. Time and again we have come across this term, that is automated facial recognition system. Fine, कुछ इस तरीके से होता है. You will pass to these cameras and that camera will automatically identify who you are. So see, automated facial recognition system works by maintaining a large database with photos and videos of people. Fine, so a large database of photos and videos of people have to be created, and then a new image of an unidentified person, often taken from CCTV footage, is compared to the existing database to find a match and identify the person. It's very simple. See, what happens? Let's see in this. Let's suppose these two CCTV cameras are there, and they have taken you walk across them. Then there will be certain sensors associated with them, and they'll take your pictures as well. Now, if we have already a database with the picture, like for example, we have Aadhaar based database with us, right? And in Aadhaar, your iris scan is there. It has your biometric information. It has your photograph as well. So the entire database is with the government. So if government wants, then it can easily implement these automated facial recognition system, because once these CCTV cameras, they take pictures in this manner, okay, they'll recognize your face from the database which is already there in the Aadhaar. So it will cross check your picture. Fine. So in this way, these automated facial recognition system works. Now, the artificial intelligence technology used for pattern finding and matching is called neural networks. इसमें time and again, see, UPSC these days have been asking questions based on science and technology a lot, especially with the emerging technologies like blockchain, artificial intelligence, Internet of Things and all. So at least the terms which are very like common with these technologies, we should know about these. So द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो काम करती है इसमें ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में, वो काम करती है पैटर्न फाइंडिंग के बेसिस पे एंड पैटर्न फाइंडिंग एंड मैचिंग विच इज़ कॉल्ड, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन. ये जो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, it can play a vital role in crime prevention and criminal identification and verification, missing people and unidentified bodies, by facilitating easy recording, analysis, retrieval and sharing of information. And time and again, you people might have seen even in the movies, even in the crime web series, that they take some sort of picture from the CCTV cameras, and they try to find that do we have exact person in our database or not, and then they can easily find out, okay, this is a serial killer, or not serial killer, but actually this is a person who is involved in so many criminal activities and all. So with this, they can easily find the persons involved in the criminal activities as well. If suppose there is a missing person or unidentified body is there, so it becomes easy for the authorities, for the law enforcement and investigation authorities to carry out these operations. Now, National Crime Records Bureau NCRB has released a request proposal for an automated facial recognition system to be used by police officers across the country. ठीक है, NCRB ने ये रिक्वेस्ट रखी है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CCTNS, इज़ अ कंट्री वाइड इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन क्राइम इंसिडेंट्स एंड सस्पेक्ट्स, connecting FIR registrations, investigations and charge sheets of all police stations and higher offices. तो obviously हम इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Then integrated criminal justice system, ये क्या होता है? It is any computer network. ठीक है, सिस्टम या आर्किटेक्चर, मतलब ये कोई कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई भी आर्किटेक्चर हो सकता है, दैट अलाउज जस्टिस प्रैक्टिशनर्स एंड एजेंसीज टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन between systems or across jurisdictional lines. For let's suppose there is a court here and they want some sort of data
for a particular accused, and they can ask that data from other jurisdiction or a judicial authority easily. So in this way it can help to resolve the cases very on a fast basis actually. Now एक पोर्टल है खोया पाया पोर्टल. खोया पाया पोर्टल ये एक सिटीजन बेस्ड वेबसाइट है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो बच्चे मिस हो जाते हैं या किसी को मिलते हैं तो वो सब खोया पाया पोर्टल पे दे दिया जाता है. स्टेट स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम होता है इसके अंदर भी. सी all these databases can be used for automated facial recognition system, but prerequisite यही है that we need a database, only then we can do further things, right? So ये हो गया. Now ये जो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. अ फेशियल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव योर सिक्योरिटी बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हु एंटर्स योर प्रोमाइस विल बी अकाउंटेड फॉर, राइट. चाहे वो होम सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी हो या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हो. एक्चुअली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में तो बाय डिफ़ॉल्ट वी यूज़ सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके. बट on a large scale it can be used for domestic purposes as well. Now high accuracy. With today's technology, face ID technology is becoming more and more reliable. The success rate is currently at a high due to the development of 3D facial recognition technologies and infrared cameras. Fine. फुल्ली ऑटोमेटेड है ये, तो इसमें एक्यूरेसी है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, फुल्ली ऑटोमेटेड है. द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैन नाउ फुल्ली ऑटोमेट द प्रोसेस. फाइन, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इट इंश्योर्स इट्स एक्यूरेसी एट अ वेरी हाई रेट. दिस मीन्स दैट कन्वीनियंस एंड लोअर कॉस्ट भी रहेगी. सपोज़ किसी ने अपनी होम सिक्योरिटी में ऐसा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अगर लगवा लिया है तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. दे कैन ईजिली फाइंड आउट हु इज़ दैट अनआइडेंटिफाइड पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर और समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली it might be costly for home security purposes, but on a larger scale, for example for certain department security, one can use it. Fine. So ये इसके कुछ benefits हैं, but obviously every technology comes with certain cons, right? Certain concerns which we have to address. So government abuse of facial recognition technology can be there, as it can be used as a tool of control and risk inaccurate results. Amid NCRB's controversial step to install an automated facial recognition system, India should take note of the ongoing privacy debate in the US. Obviously, privacy concerns तो इसमें होंगे, because whenever there is an automated facial recognition system, it needs a database which should store some of your biometric information. So privacy concerns हैं इसमें. Apart from that, in the absence of data protection law, Indian citizens are more vulnerable to privacy issues. You might all be knowing that we are right now working on the data protection bill, ठीक है, एंड उसमें कुछ कंसर्न्स हैं जिसमें कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को एग्जेम्प्ट भी किया गया है दैट दे कैन यूज़ द पब्लिक्स डेटा एज वेल. सो अभी थोड़ा सा उसको एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है उसमें. बट बिकॉज इंडिया इज़ नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर लॉ विद रिस्पेक्ट टू डेटा privacy and data protection, so obviously it becomes more vulnerable to hijack or with respect to the privacy concerns. Fine. So police departments in London are under pressure to put a complete end to use of facial recognition systems. एक्चुअली लंदन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे प्रेशर है कि आप ये जो पूरा ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स आप यूज़ करते हो कि इसको ना यूज़ किया जाए. फॉलोइंग एविडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनएफिशिएंसी देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है इस प्रोसेस में, एंड इनएफिशिएंसी बहुत है. इवन सैन फ्रांसिस्को रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ कंप्लीट बैन ऑन पुलिस यूज़ ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन. दोज ऑफ यू हु माइट हैव सीन मेनी ऑफ द English web series, you might be knowing that people use hell lot of facial recognition systems in their cities. So you might be aware of that. Although police in India don't use such kind of things, and NCRB has proposed to use it, but we can see that how the Western countries are going towards the ban on the facial recognition system. Fine.
So okay, I have reached end of the document, and that is the entire topic in this video. I hope it helps, and thank you.